So basically the term latent means hidden. What is, why it is termed as hidden? देखिए, whenever we heat anything, we always expect that obviously after absorbing the heat energy there will be an increase in temperature. Similarly, when the heat energy will be evolved, so after releasing the heat energy, it is always expected that the material will decrease the temperature. ठीक है? So the obvious effect of the heat energy is to bring the change in temperature. ऐसा ही है ना, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कोई भी मटेरियल जो है वो जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कोई भी मटेरियल जब हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. So the obvious effect of the heat energy is to bring the change in temperature, but the change in temperature does not take place, yani it is not always ke on absorbing the heat energy the temperature is continuously rising. At one point the temperature stays constant, and at which point the temperature stays constant? When there is a change of state, when there is a change in intermolecular bond, because in that case internal energy is converted into potential energy, which is used to compress or stretch the bond during the change of state. So during the change of state, the main effect of the heat energy is hidden. And what is the main effect of heat energy? हमेशा यही expect किया जाता है कि temperature, the main effect of heat energy is to bring the change in temperature. मगर during the change of state, the thermal energy is continuously being absorbed or evolved, but it does not bring change in temperature. It does not increase or decrease the temperature. However, that thermal energy is converted into potential energy and is used to stretch, yani break, or compress, yani form the bond without any change in temperature. ठीक है? So during the change of state, the main effect of the heat energy, that is to bring change in temperature, is hidden. That is why during the change of state, the amount of the heat energy absorbed or released is known as latent heat. So I hope it's clear that what is latent heat. Latent heat is the amount of the heat energy absorbed or released during the change of state without any change in temperature. Why it is necessary to mention without any change in temperature? Because during the change of state there is no change in temperature. Okay, and the amount of the heat energy which is used to bring the a change in temperature, that is known as heat capacity. जो energy temperature में change ला रही है उसको heat capacity कहेंगे. जो thermal energy state को change कर रही है without changing the temperature, that energy is known as latent heat. And the term latent means hidden. The main effect of the heat energy is hidden during the change of state. And what is the main effect of the heat energy? To bring the change in temperature. So I hope it's clear. अच्छा, अब अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि why during the change of state the thermal energy does not bring change in temperature, however it is continuously being absorbed or released, thermal energy क्या कर रही होती है during the change of state? It is converted into potential energy which is used to stretch or compress the bond. जाहिर सी बात है, जब वो bonds को break कर रही है और जब वो potential energy में convert हो रही है, and potential energy does not depend upon temperature, so there is no change in temperature, and that amount of the heat energy which is used to break the bonds or form the bond is known as latent heat. I hope it's clear. Now there are two types of latent heat, obviously, because you know that there are two stages of change of state. The solid turns into liquid or liquid turns into solid. एक ये state होती है, एक ये stage होती है, and the next one is when liquid turns into gas or gas turns into liquid. ठीक है? तो अगर मैं खाली आपसे latent heat बोलूंगी तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि it is the amount of thermal energy absorbed or released during the change of state at constant temperature. At constant temperature mention करना जरूरी है, because during the change of state there is no
नो चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए तो उसको लेटेंट हीट कह रहे हैं, हिडन हीट कह रहे हैं। हिडन क्यों? क्योंकि मेन अफेक्ट ऑफ द हीट एनर्जी इज हिडन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मगर अगर मैं आपको खाली लेटेंट हीट बोलूंगी तो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, कौन सी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, वेदर इट्स मेल्टिंग और फ्रीजिंग और बॉइलिंग और कंडेंसेशन, ये तो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज वाई द लेटेंट हीट इज डिवाइडेड इनटू two types: latent heat of fusion which is represented by capital L और उसका सबस्क्रिप्ट नीचे बॉटम पर जो सिंबल होता है ना उसके बॉटम पर बनाते हैं। the symbol small f is the symbol for fusion, so the symbol for latent heat of fusion is capital L small f. Latent heat of fusion is the amount of heat energy absorbed or released when solid substance turns into liquid और वाइस वर्सा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फ्यूजन से ये पता चल रहा है कि कौन सा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जब सॉलिड लिक्विड में टर्न हो रहा है या लिक्विड सॉलिड में टर्न हो रहा है, एक ही बात है। अगर सॉलिड लिक्विड में टर्न हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, तब भी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, और अगर फ्रीजिंग हो रही है तब भी जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि जब फ्रीजिंग होगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी ना, उसको भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। द अदर टाइप इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Similarly, the symbol for latent heat of vaporization is capital L and the subscript V. V denotes vaporization, and vaporization means the latent heat of vaporization is that amount of heat energy which is used to change liquid into gas और वाइस वर्सा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी चाहे लिक्विड गैस में चेंज हो या गैस लिक्विड में चेंज हो, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द टर्म फ्यूजन एंड वेपराइजेशन डिनोट्स दैट विच चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, वेदर इट्स मेल्टिंग और फ्रीजिंग or boiling or condensation. Okay, the symbol for latent heat of fusion is capital L and symbol for latent heat of vaporization is capital L V, and this F and V are the subscript, यानी ये L के बॉटम पर हमने F और V स्मॉल में बनाया हुआ है। ओके, now look here. Here we have compared both types of the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. As I have told you that latent heat of fusion is the amount of thermal energy, is the amount of heat energy required to change the state from solid to liquid and vice versa. यानी चाहे solid to liquid में change हो या liquid to solid में change हो, दोनों केस में the amount of the heat energy which is absorbed is known as latent heat of fusion without any change in temperature. Why over here we are mentioning without any change of temperature? Because you know that during the change of state there is no change of temperature, as internal energy is converted into potential energy and potential energy does not depend upon temperature, and it is represented by capital L F. Okay, यह हम अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, समझ आई गया होगा अब आपको। वेपराइजेशन से इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा, यानी लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड। इन बोथ द केस वील कॉल द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ state there is no change in temperature. And what is the symbol for latent heat of vaporization? It is represented by capital LV. अच्छा, अब वही कॉन्सेप्ट जैसे हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ा था, द सिंबल फॉर हीट कैपेसिटी वाज कैपिटल C, एंड हीट कैपेसिटी कौन सी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है? It is the amount of heat energy which brings the change in temperature. However, latent heat is the amount of heat energy which brings the change in state. So during the a change of state there is no change in temperature, so latent heat is the energy absorbed or released to change the state without change in temperature. Okay, or
as there is no change in temperature, that is why it is termed as latent heat. Latent means hidden during the change of state. The main effect of the heat energy, that is to bring change in temperature, is hidden. That is why it is represented by latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Fusion और vaporization से आपको ये पता चल रहा है कि what change of state is taking place. Okay, whether it's melting, freezing और boiling, condensation. अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने आपसे वहां पे एक क्वेश्चन किया था, we took 2 samples of water, 100 gram and 1000 gram of water, and both were required to change the temperature from 30 degree centigrade to 60 degree. तो क्या दोनों एक ही टाइम में चेंज करेंगे टेम्परेचर? उस वक्त हमने ये बात डिस्कस की थी ना कि नो, 100 gram of water will raise the temperature quicker than 1000 gram of water. It means कि heat capacity depends upon mass. Similarly, अगर मैं आपसे कहूं कि if we take 2 sample of ice, 10 gram of ice and 100 gram of ice, will same amount of heat energy will be absorbed? Will both of them take the same time to melt completely? Obviously not. 10 gram of ice will melt quicker than 100 gram of ice. इसका मतलब क्या हुआ? As heat capacity depends upon mass and heat capacity depending upon mass is known as specific heat capacity. Similarly, latent heat also depends upon mass. ठीक है, जिसका मास कम होगा वो कम टाइम में स्टेट चेंज करेगा और जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम में स्टेट चेंज करेगा. इसका मतलब है latent heat depends upon mass and the latent heat depends upon mass is known as specific latent heat. What does the term specific means? Specific means पर यूनिट मास. तो अगर मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेटेंट हीट पर यूनिट मास. अगर मैं बोलूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो इट इज LF, और अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब भी टर्म स्पेसिफिक यूज होती है तो सिंबल स्मॉल में हो जाता है. सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज स्मॉल LF. And what is the small LF? Latent heat of fusion per unit mass, यानी capital LF upon M. ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हुआ ना. Heat capacity was represented by capital C and specific heat capacity was represented by small c, and specific means per unit mass, so small c is capital C upon M. Similarly, over here latent heat of fusion is represented by capital LF. Specific latent heat of fusion is represented by small LF, and specific latent heat of fusion means latent heat of fusion पर यूनिट मास. तो मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल LF इज इक्वल्स टू कैपिटल LF अपॉन M. और कैपिटल LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज यूज टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में आप सिर्फ मास इंक्लूड कर देंगे. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर. इट इज द सिमिलर कॉन्सेप्ट एज वी हैड डिस्कस्ड इन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. द टर्म as the term specific is mentioned over here, so it is represented by symbol small LF, and small LF is capital LF upon M. कैपिटल LF अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, तो उसका यूनिट जो हो गया वो जूल्स हो गया, मास का यूनिट किलोग्राम हो गया. तो स्मॉल LF का यूनिट इक्वेशन से देखकर आप बता सकते हैं स्मॉल LF इज कैपिटल LF अपॉन M. कैपिटल LF का जूल्स हो गया, पर M का किलोग्राम हो गया. सो द SI यूनिट ऑफ स्मॉल LF इज जूल्स पर kilogram. I hope it's clear. The similar concept will apply here in latent heat of vaporization as well. Latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to change liquid to gas or gas to liquid at constant temperature. Latent heat of vaporization is represented by symbol capital LV, and specific latent heat of vaporization means, specific means per unit mass, so specific latent heat of vaporization means latent heat of vaporization per unit mass. And as the term specific is mentioned, so it is represented by symbol small LV. मैंने आपको बताया था जब भी specific होता है तो उसको हम small symbol से, small letter case के symbol से mention करते हैं.
स्पेसिफिक मीन्स पर यूनिट मास। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा डेफिनेशन में? अगेन मास इंक्लूड कर दें, क्या हो जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस and required to change 1 kilogram of liquid to gas and vice versa at constant temperature। हम ये 1 किलोग्राम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिक मीन्स पर यूनिट मास, और हमने ये टर्म स्पेसिफिक क्यों डिस्कस की? बिकॉज वी गॉट टू नो दैट लेटेंट हीट डिपेंड्स अपॉन मास। नॉट all the liquids will boil completely at the same rate. Not all the solids will melt completely at same rate. The solids with a lower mass will melt quickly than the solid with the larger masses. Similarly, liquids with smaller masses will boil quickly than the liquids with larger masses. यही freezing और condensation में भी है। So small LV is a specific latent heat of vaporization which is latent heat of vaporization per unit mass। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल LV is capital LV upon M. Capital LV is latent heat of vaporization which is amount of heat energy. So it's measured in joules, mass is measured in kilogram. तो small LV का unit क्या हो गया from the equation? As a small LV is capital LV upon M, LV is measured in joules, mass is measured in kilogram. So SI unit of small LV is joules per kilogram। I hope concepts are clear कि when the amount of heat energy is required to increase or decrease the temperature, it is known as heat capacity or specific heat capacity. However, when the amount of heat energy is used to bring the change in state, it is known as latent heat, specific latent heat। कौन सा change of state हो रहा है ये हमें पता चलेगा from the term fusion and vaporization। If it is mentioned latent heat of fusion, it means कि heat energy is used to change the state from solid to liquid or liquid to solid at constant temperature। And if it's latent heat of vaporization, means it is the amount of heat energy required to change the state from liquid to gas and or gas to liquid at constant temperature। latent का क्या मतलब होता है? The term latent means hidden। क्या hidden है? During the change of state, the temperature is hidden। It means कि the main effect of the heat energy is hidden। And what is the main effect of heat energy? Obviously, generally यही expect किया जाता है ना कि when the heat energy is absorbed or released, there is a change in temperature। So during the change of state, there is no change in temperature। However, heat energy is continuously being absorbed or released। इसका मतलब क्या है कि heat energy जाहिर है जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो हीट एनर्जी हिडन है। वो हीट एनर्जी क्या कर रही है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में विच इज यूज टू स्ट्रेच और कंप्रेस द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स। और टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इस कॉन्सेप्ट को हम दफा डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू नाउ। So this is it from today's class. I hope that the concepts discussed in today's class are well clear to you. Inshallah, see you soon in the next class with the new topic. Till then, Allah Hafiz.